Kanpur, Uttar Pradesh, 3rd June 2022. A violent communal clash between two communities. 800 people booked, 50 people arrested, posters of 40 accused plastered. In midst of claims and counterclaims, there is now a clear indication. Bulldozers could roll in Kanpur, on the buildings in the old city from which stones were allegedly being pelted. As per the administration, a list of 147 buildings is being drawn and an investigation is being carried out if there is illegal construction. देखिए केडीए अपने इस कार्रवाई को अंजाम दे रहा है। लगातार केडीए ने चमनगंज और बेकनगंज एरिया में पूर्व में भी प्रवर्तन किया है, लेकिन अभी इस पर्टिकुलर इंसिडेंट के बाद बहुत ही सघन रूप से इस पे इंटेंसिव प्रोग्राम बना के केडीए कार्रवाई करेगा और निश्चित ही जो लोग इलीगल एनक्रोचर्स हैं उनके विरुद्ध में जो भी कार्रवाइयां लीगली प्रोसीड करने की हैं वो की जाए। The local Qazi claiming that residents are being unfairly targeted because of their religion has now issued a veiled threat if bulldozers roll in the old city of Kanpur. अगर इस तरह की कोई कदम उठाए गए तो फिर सर पे कफन बांध के लोग निकल भी आएंगे मैदान में। ज़्यादा दिन इंतजार नहीं कर पाएंगे। अब ज़्यादती की इंतहा, सब्र की इंतहा हो रही है। अगर यही मतलब होना है तो फिर ठीक है। वो On June 3rd, clashes broke out between two communities in Kanpur. The reason, a protest against BJP spokesperson Nupur Sharma for her remarks against Prophet Muhammad. Crowds of protesters resorted to stone pelting during a Bandh call observed by members of the Muslim community. As per the UP police, allegations of links between Islamic outfit PFI and the violent protest are also being probed. The cops working on a four-pronged investigative pitch. Who was involved in the stone pelting conspiracy? Who all were pelting stones? Where do the stone pelters live? Is there involvement of a political angle that instigated violence? The main question, was the violence premeditated or pre-planned? पॉलिटिकल कनेक्शन अभी जुड़ा है क्या इसमें? किसी पार्टी का ऐसा हो कि प्रोवोक किया गया हो इस द्वारा इस तरीके से? ये तो हम लोगों ने देखा है, कुछ फोटोग्राफ्स आ रही हैं, तो वो भी विवेचना का प्रश्न है, उस पर भी कार्रवाई आगे चल रही है, क्योंकि ये जानबूझ के घटना कारित कराई गई और की गई जिससे कि शांति व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो। While the communal pot still continues to simmer in Kanpur, the big question, will Baba's bulldozer roll in Kanpur? Will action be taken against only one community or both involved? And what will be the pushback? If you like the video, do like, comment, share and subscribe.